Bismillah Rahman Rahim. I am Sarah Khan, your instructor for the course Application of Statistics in Psychology with course code 509. This is our lecture number 8. This lecture is also connected with our previous two lectures. In the previous two lectures, we learned about the Pearson correlation. Uh, we learned about the correlation, and one method for measuring the correlation is Pearson correlation that measures the degree of linear relationship between two variables. In the situation when the x and y values consist of numerical scores from an interval or the ratio scale of measurement. However, other correlations have been correlation methods have been developed for the other type of data. This Spearman correlation is for ordinal data. So, for the today, we will learn about the Spearman correlation and what type of the data is used in this correlation. Okay, the contents which we will cover in this lecture, learning about the Spearman correlation, learning about the ranks which are used in this Spearman correlation, because in Spearman correlation we are concerned about the ordinal data, and ordinal data is linked with ranks. How to assign the ranks, assigning ranks टू द सेट ऑफ स्कोर्स एंड जब हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्कोर होते हैं तो कुछ स्कोर मिलते जुलते भी होते हैं, यानी 2 या 3 दफ़ा कोई एक ही डिजिट रिपीट हो जाता है, मसलन 222 या 555, दैट आर कॉल्ड टाइड scores. So, how to deal with these tied score and assigning the ranks to these tied scores. Then the computation of Pearson correlation for a set of data. When Pearson correlation formula is used with the data from an ordinal scale ranks, the result is called the Spearman correlation. The Spearman correlation is used in two situations. We will discuss these two situations one by one. First, I said that when the Pearson correlation formula is used, formula is the same. One separate formula is also there. We calculate the Spearman correlation with that formula also. But when Pearson correlation formula is used for the ranks or the ordinal data, then it will not remain the Pearson correlation. It will call Spearman correlation. Spearman correlation is used in two situations. First, when we want to measure the relationship between the two variables x and y, and both variables are measured on ordinal scale. An ordinal scale typically involves ranking, as I said here, that the ordinal scale or bracket में मैंने लिखा हुआ ranks. An ordinal scale typically involves ranking individuals rather than obtaining numerical scores. Rank order data are fairly common because they are often easier to obtain than interval or the ratio data. For example, a teacher may feel confident about ranking or ordering the students' relationship abilities, but would find it difficult to measure relationship on some other scale. So we noted here that the Spearman correlation or the
method of this finding the correlation, the relationship, Spearman correlation, is used when both the variables are based on the ranking or the ordinal data. The other situation in which the Spearman correlation is used when the researcher wants to measure the consistency of the relationship between X and Y, independent of specific form of the relationship. Pearson correlation measures the form of the relationship and the direction of the relationship and also the strength of the relationship. But when the researcher want to assess the consistency of the relationship between the two variables, then he or she will use the Spearman correlation. In this case, the original scores are first converted into ranks, then the Pearson correlation formula is used with the ranks. In the Spearman correlation, the ranks are used rather than the scores. So if the researcher want to measure the consistency of the relationship, then the researcher first will convert the original scores into ranks. We will learn in today's lecture how to convert the scores into ranks. Then the Pearson correlation formula will be used with these ranks, and Spearman correlation measures the degree of monotonic relationship between the two variables. Because the Pearson formula measures the degree to which the rank fit to a straight line. In previous lecture we learned about it thoroughly. It also measures the degree of consistency in the relationship for original scores. When there is a consistency or the consistently one directional relationship between the two variables, the relationship is said to be monotonic. Thus, the Spearman correlation measures the degree of monotonic relationship between the two variables. The word monotonic describes a sequence that consistently increasing or decreasing. Like the word monotonous, it means constant and unchanged, changing. मतलब ये कि अगर y वेरिएबल के x वेरिएबल के साथ y वेरिएबल बढ़ रहा है तो हमेशा x वेरिएबल के साथ y वेरिएबल बढ़ेगा ही, कभी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा रिवर्स भी है। आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता, कभी y वेरिएबल जो है वो कंसिस्टेंटली चेंज होता है विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द एक्स वेरिएबल, और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि वाई वेरिएबल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द एक्स वेरिएबल उसके साथ नहीं बढ़ता। तो अगर ऐसा है, स्पेयरमैन कोरिलेशन में होता ही ऐसा है कि एक्स वेरिएबल हम जब रैंक्स में उसको कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो स्पेयरमैन कोरिलेशन भी हमने यूज़ करना है, तो वो दरअसल मोनोटोनिक रिलेशनशिप को मेजर कर रहा है, क्योंकि स्पेयरमैन कोरिलेशन में जो रिलेशनशिप मेजर किया जाता है उसमें कंसिस्टेंटली वन डायरेक्शनल रिलेशनशिप को देखा जाता है। जब हम कंसिस्टेंटली वन डायरेक्शनल रिलेशनशिप को मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक रिलेशनशिप। So for calculation the Spearman correlation, in this situation, first the researcher will convert the scores into the ranks, then after the original x values and the y values have been ranked, the correlation calculation necessary, calculation of sum of squares and other calculations of the Pearson formula. First we will rank the x and y variables,
We can in the practice we will see that the ranks are just simply a set of integers 1, 2, 3, 4. To compute the mean for these integers, you just locate the midpoint of the series by n plus 1 by 2. Also because the x rank and the y ranks are the same values. SS for the x, any sum of square for x, will be identical to the sum of square for y, which is necessary calculation for using the Pearson formula, Pearson correlation formula with the ranks. इसमें हम अभी देखेंगे कि हमने किस तरह से स्कोर्स को रैंक में चेंज करना है. Spearman correlation can be used to measure the consistency of the relationship independent of its form. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको रैंक्स में चेंज करेंगे. रैंक्स में अब हमने कैसे चेंज करना है. हम सबसे पहले एक्स वेरिएबल को देखते हैं. एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4 एंड 10. अगर हम इससे कम से ज़्यादा वैल्यू की तरफ अरेंज करें तो सबसे पहले 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 10 आएगा. तो यही इनके रैंक्स हैं. हमने 2 को जब रैंक में चेंज किया तो उसे हमने 1 कह दिया. 3 को जब हमने रैंक में चेंज किया तो उसे 2 कह दिया. 4 को जब हमने रैंक में चेंज किया तो हमने उसे 3 कह दिया. और 10 को जब हमने रैंक में चेंज किया तो उसे हमने 4 कह दिया. इसी तरह से हमने y वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी रैंक में, स्कोर को भी रैंक में चेंज किया है. इसमें भी 2 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू तो इसको हमने 1 कह दिया. 8 इज़ द सेकेंड हायर वैल्यू. 8 उसको हमने 2 का रैंक दे दिया. और इसी तरह से 9 और 10 है, इनको 3 और 4. यानी अब ये जो डेटा था रेशो या इंटरवल उसका स्केल पर, जिस पर कि हमने पहले पियर्सन कोरिलेशन मालूम की हो या कर सकते हैं, लेकिन अब रिसर्चर जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ द रिलेशनशिप को देखना चाह रहा है, तो उसमें उसको रैंक्स में पहले तब्दील किया है. We convert the score to the ranks. The lowest x is assigned a rank of 1, the next lowest rank of 2 and so on. The y scores are then ranked in the same way. The ranked are listed in table and shown in the figure. जी. जब हम रैंक्स में जो है वो चेंज कर लेते हैं तो उससे जो ये लाइन बनती है ये परफेक्टली सीधी बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है. ठीक है. ये इसी डाटा से हमारी जो हमने पीछे जो डेटा लिया है 2 के साथ हमारा डेटा है 2 के साथ 2 और 3 के साथ 8. अब इसको ग्राफ में अगर हम देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. देखिए 2 के साथ तो 2 ही है और 2 के साथ 8 है. ठीक है. और अगर नेक्स्ट देखें हम तो 4 के साथ 9 और 10 के साथ 10 और ये 4 के साथ 9 है. अगर आप ऐसे करके ऐसे इसको बनाएं, अगर हम नहीं इसके ऊपर नहीं बनेगा ये पिक्चर पे लाइन हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते. ओके. अगर हम यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करें और इधर से नीचे निकलें तो ये 4 पर आएगा, यानी 4 के अगेंस्ट. और इसी तरह से 10 के साथ 10 है. अब यही चीज़ जो है वो हमने जब रैंक में चेंज की. अब रैंक्स में अब देखें, सॉरी
1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4। ठीक है जी। और अगर हम इसको ये 1 के साथ 1, ये 2 के साथ 2, ये 3 के साथ 3 और ये 4 के साथ 4। ठीक है जी। और ये एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनी है। हालांकि ओरिजिनल स्कोर्स में जो इसका जो स्केल था, जो इसका ग्राफ था, वो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया कि वो कैसे। देन द रैंक्स आर लिस्टेड इन द टेबल, जो हम पीछे वाली और एंड शोन इन द फिगर. Note that the perfect consistency of the scores produce a perfect linear relationship of the ranks. In either case, यानी अगर पहली सिचुएशन हो तब भी, और दूसरी पहली सिचुएशन क्या थी, when the researcher have the rank data, originally x and y are the consist of ranks. Then we will use the Spearman correlation method to calculate the consistency of the relationship. And the second situation in which the researcher himself or herself want to know the consistency of the relationship and have the scores on the interval or the ratio scale. In this situation, they will first convert the scores into the ranks, and then calculate the values, the sum of scales and other calculations, and find the with the formula, using the formula of Spearman correlation, Pearson correlation, find the Spearman correlation and find the consistency of the relationship. In either case, case 1 or case 2, the Spearman correlation is identified by the symbol RS. S R तो है ही correlation का, और ये small s उसके जो नीचे लिखा हुआ है, this is for Spearman to differentiate from the Pearson correlation. Now I will demonstrate the complete process of computing the Spearman correlation, including ranking the scores. अभी जो हम स्लाइड पे डेटा देखेंगे, डेटा जो है, डेटा शो द नियरली परफेक्ट मोनोटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई. व्हेन द एक्स इंक्रीजेस वाई टेंड टू डिक्रीज, और हमेशा वो फिर डिक्रीज ही होता रहेगा. कंसिस्टेंट रिलेशनशिप पाया जाए. अगर एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज होता है तो वो हमेशा डिक्रीज ही होता रहेगा उसके इंक्रीज होने पर, और उसके इंक्रीज होने पर वाई जो है अगर इंक्रीज होता है तो वो हमेशा इंक्रीज ही होता रहेगा, तो उसे हम मोनोटोनिक रिलेशनशिप कहते हैं. There is only one reversal in the general trend. To compute the Spearman correlation, we first rank the x and y value, and we then compute the Pearson correlation. Okay, this is the data. Okay, x 3, 4, 10, 11 and 12. 3 is the smallest, 1 rank, or 4 is the second one, and the 10 is the third ranked, and 11 fourth, and 12 fifth. We will take the square of these values because in the calculation we needed these values. Then this is the ranking of the y variable. Okay. अब इसमें 2 सबसे नीचे है तो ज़ाहिर है कि इसका 1 यहाँ पर इसके आगे आएगा, जहाँ कहीं भी वो प्लेस्ड होगा. और इसी तरह से 9 जो है वो इसके बाद 9 ही है. Okay.
तो दूसरे नंबर पर आ गया। फिर इसके बाद 10 है, इसके आगे 3 नंबर आ गया, इसके बाद 11 है, तो इसके बाद चौथा नंबर आ गया और इसके बाद 5वां नंबर। ठीक है जी, ओके। और इसका भी हमने स्क्वायर लेके और इसका समेशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हमें समेशन चाहिए कि जब हमने x और y को मल्टीप्लाई करना है तो क्या वैल्यूज आती हैं और उसका समेशन भी होना चाहिए। तो ये तीनों तरह के समेशन जो हैं ये पहले से कैलकुलेटेड हैं। अच्छा, अब आप अगर एनालाइज करें तो जो x की वैल्यूज़ भी हैं वो भी 1 2 3 4 5 हैं, बेशक उनका अरेंजमेंट जो भी है। और जो y की वैल्यूज़ हैं वो भी 1 2 3 4 5, इसका टोटल भी 15 है, इसका टोटल भी 15 है। और इसी तरह से इस एक्स स्क्वायर का भी टोटल 55 है, इसका भी 55। ठीक है, तो नेक्स्ट कोरिलेशन को कंप्यूट करने के लिए जाहिर है कि हमें एसएस चाहिए फॉर एक्स एंड एसएस फॉर वाई and SP. Remember that all three values are computed with ranks, not with the original scores. अब ओरिजिनल जब हमने उन्हें रैंक्स में चेंज कर दिया, अब ओरिजिनल स्कोर्स ख़त्म हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रैंक्स हैं वही हमारे स्कोर्स हैं, उन्हीं से हमने डील किया। The X ranks are simply 1 2 3 4 5. These values have summation x is equal to 15 and summation x square is equal to 55. The SS for x हम सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर जो है वो मालूम करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर फॉर x, तो समेशन x स्क्वायर हमारे पास 25 है और मेरा ख्याल 25 है, 55 है। और समेशन x हमारे पास है 50। ओके, 15 का है स्क्वायर। व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन करना बहुत आसान है और लैपटॉप पे इस तरह से करना, लैपटॉप से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लिखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, एन देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 and 5। इसमें तो स्क्वायर में करना था। ओके, 15 को 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225
225 और 225 को अगर हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 5 to 220. So subtract the value. 225 divided by 5. It's 45. 55 minus 45 is equal to 10. SS y sum of square of y बिल्कुल सेम ही होगा क्योंकि उसकी वैल्यूज भी सेम ही है। हम इसी को कॉपी करते हैं और वो पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो भी 55 है और हमारा समीशन वाई जो है वो भी हमारा 15 है उसका स्क्वायर किया और हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो भी 5 ही है, तो दोनों का ये बिल्कुल सेम होगा। अब हम एसपी कैलकुलेट करते हैं। एसपी कैलकुलेट करने के लिए हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, बाकी तो चाहिए हमें बताइए 36 है जी समीशन एक्स वाई। तो समीशन एक्स वाई 36 और माइनस 15 and divided by 5. SP is equal to 36 सेम 45 भी आएगा जब चेक करते हैं 15 225 को डिवाइड किया 5 से तो ये आ गया मेरे पास 45। जी ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये इसकी डायरेक्शन माइनस है, माइनस रिलेशनशिप। 45 में से 36 निकाल देते हैं तो हमारे पास माइनस के 9 माइनस के 9। So SP is equal to 9. Now we will calculate Spearman correlation. SP divided by ये है जो इकट्ठे भी अलग अलग वेरी करते हैं और ये दोनों वेरिएबल जो इकट्ठे वेरी करते हैं। तो हमें नेगेटिव ट्रेंड पता चल रहा है, इसकी जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। SP हमारे पास अभी भी निकला है वो क्या है जी 9 माइनस 9 और इसको हमने डिवाइड करना है 55 SSY is 55
55 को 52 से मल्टीप्लाई किया, और इसका हमने ले लिया अंडर, तो ये हमारी साइज है 55 -9 divided by 55. Nine divided by 55. Nine minus 9 divided by 55. Minus 0.164. And this value of R is negative. स्मॉलर आर इस्तेमाल होता है जी, ये कैपिटल आर आपने नहीं इस्तेमाल करना इसके लिए। ठीक है जी। Spearman correlation indicates the data show a consistent negative trend. हमारी आती है हाउ टू रैंक द टाइड स्कोर। टाइड स्कोर जो कि एक ही स्कोर बार बार यूज हुआ। When we are converting scores into the ranks for the Spearman correlation, you may encounter two or more identical scores. Whenever two scores have exactly the same value, their ranks should also be the same. This is accomplished by the following procedure. सबसे पहले we list the in order from smallest to the largest, including the tied values in the list. फिर हमने जैसे भी टाइड पड़ी हुई हैं, जहाँ भी पड़ी हुई हैं, उनको हमने रैंक्स जो हैं वो अलॉट कर देंगे। रैंक्स को अलॉट करने के बाद अगर तीन एक जैसी वैल्यूज़ हैं तो उनके रैंक्स को हमने प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमने उन तीन स्कोर्स को दे देनी है। प्रैक्टिकली हम अभी करके देखते हैं इसे जी। ये स्कोर्स थे और हमने पहले उनको अरेंज कर लिया। ठीक है, 3 3 देखिए 2 दफ़ा है, 6 6 6 3 दफ़ा है। ठीक, तो अब हम इसका पहला है रैंक इस 3 का और इस 3 का 2 है, तो हम 1 + 2 करके इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारा फाइनल रैंक फॉर बोथ स्कोर्स calculated 1 + 2 and divided by
2. This is 1.5. We will allot this rank value 1.5 to the both tied scores. In the same way, 3 times 6 are ranked with the number 4, 5 and 6. We will plus these scores. 4 plus 5 and plus 6 is equal to 15, and we will divide it by 3. तो 3 चीज़ें हैं जी, 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये आ गया 5. तो हम इन सारे उसको हम देख लेते हैं. 6 को हमने क्या रैंक देना था? 5 भी इसी का रैंक है, 5 भी इसी का रैंक है और 5 भी इसी का रैंक है. ठीक है जी. और ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा. ये हैं 1 and 2 स्कोर्स, लेकिन हमने इनकी वजह से, क्योंकि ये एक जैसे हैं, हमने उनको कोड जो साइन किया वो सिमिलर किया. इसी तरह से यहाँ भी मैंने सिमिलर रिकॉर्ड किया. अब ये 12 है. 3 3 6 6 6 इसकी पोजीशन जो है वो 7 है, तो ये यहाँ पर 7. अब आप देखें कि ये 2 एक जैसे स्कोर्स थे, इनको एक जैसा रैंक मिला. ये 3 एक जैसे स्कोर्स थे और इनको एक जैसा रैंक मिला. इसी के अंदर 1 है और इसी के अंदर 2 है. ये 3 अलग से है, इसी के अंदर 4 है, इसी के अंदर 5 है, इसी के अंदर 6 और ये 7 अलग से. ठीक जी. ये तरीका है कि हमने रैंक्स स्कोर्स को, अगर टाइड स्कोर्स हैं तो पहले हमने उनको रैंक में जो पोजीशन बनती है वो दे देनी है, और उसके बाद हमने फाइनल रैंक्स करनी है. ये जो अभी हमने एक फार्मूला कैलकुलेट किया है फॉर फाइंडिंग द स्पीयरमैन कोरिलेशन, ये स्पीयरमैन कोरिलेशन का ही फार्मूला था जिसे हमने रैंक्स पर अप्लाई करके तो स्पीयरमैन कोरिलेशन मालूम की. अब स्पीयरमैन कोरिलेशन का अपना एक तरीका भी है, विच इज़ 1 minus 6 summation d square and divided it by n and n square minus 1, where d is the difference between the x rank and the y rank for each individual. This special formula produces the same result that would be obtained from the Pearson formula. So we will convert these set of data into the ranks and then take the difference and the difference score. 1 minus 5 will be minus 4, 2 minus 3 will be minus 1, 3 minus 4 will be minus 1, 2 minus 2 will be plus 2 and 5 minus 1 will be 4. स्क्वायर लिया तो 4 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 1 का लिया तो 1 आ गया,
फिर 1 ले लिया, ये साइंस ख़त्म हो गए, क्योंकि जब हम माइनस का स्क्वायर ले लेते हैं तो उसका माइनस ख़त्म हो जाता है, और ये पूरा, और इसका 16 आ गया। इन सब को हमने जमा किया तो हमारे पास 38 आ गया। We'll put this in this formula. 1 minus 6 and summation d square is 38. Yes, 38. We will multiply with 38 and divide it by, I think, 1, 2, 3, 4, 5. N is equal to 5. N square and minus 1. 5. Okay, we will calculate it. If we multiply 6 by 38, then we will get 228. 228. And divide it by 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 आएगा, और उसमें से 1 माइनस करें तो 24 आ जाएगा। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। तो इसे 120 से 1 minus 28 divided by 120. 28 divided by 120. This 1 point. 1 point. Now we will subtract this value from 1. 1 minus 1.9 is equal to minus 0.9, equal to minus 0.9. This is exactly the same answer that we obtained in the last example using the Pearson formula on the same ranks. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. Yes, ये माइनस माइनस इसकी है और इसके साथ ये कैलकुलेशन है जी और स्क्वायर वैल्यू की. This value is not same. Why this value is not same? Oh, we here in SSX and SSY we put 55, which is the total of x square and total of y square. Here we will put 10 because
Okay, we put the correct values. SSX, let's show you the value of XSX, and Y is 1010. I put there 55, which was the total of एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं, ये समटाइम्स जब हम काम कर रहे होते हैं ये हमसे हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई इसलिए हो जाती हैं कि क्रॉस चेक्स बहुत सारी जगहों पर लगे होते हैं। अब हमने एक क्रॉस चेक था कि हमने ये दोनों की जो कैलकुलेशन है, जो कि हमने स्पीयरमैन फार्मूला पियर्सन फार्मूला से रैंक्स को स्कोर्स को रैंक में चेंज करके जो कोरिलेशन मालूम की थी, दैट शुड बी इक्वल टू जो हमने जो एक स्पेसिफाइड फार्मूला है रैंक कोरिलेशन का उसके साथ की है। तो दिस इज 10 into 10, then I will divide it by 10. I divide it by 10, it will be -9. Okay, now this value of correlation is exactly same which we have calculated with the Pearson formula. Okay, this is activity for you. These are the scores. First you will convert these scores into the ranks, and then you will compute the Pearson correlation. Pearson correlation. You will first calculate from this data the Pearson correlation to measure the degree of relationship between the two scores with these scores. Then for computing the Pearson correlation with both formulas, you will convert these scores into the ranks and then compute the Pearson correlation with both formulas, and also compute the value of R square, which is coefficient of determination, and this will tell us the variance for y is predicted from how much variance is predicted by x for y. So this is your activity, and these are the references if you want to consult. And today we learnt the other method of finding the correlation. Pearson correlation method use the data from the interval and the ratio scale, while when we are having the data from the ordinal scale, then and doing work with the ranks, then we will have to calculate our correlation or measure the consistency of the relationship through using the formula for Pearson correlation. Pearson correlation can be calculated with the formula of Pearson correlation after converting the scores into ranks, or if you have already the scores into already have the ranks. Okay, and there is also an alternative other formula finding the Pearson correlation. If we calculate the Pearson correlation through using the Pearson correlation and also the specified or special formula for the Pearson correlation, the correlation will be same. The calculated correlation, we for example we calculated
correlation, in the Pearson correlation with both formulas, and we find the same value of correlation, same perfect negative correlation. Any queries, any query or any question will be handled in the class, inshallah. Allah Hafiz.